Hello, it's Kim and TJ here. We have your monthly Zodiac reading for March this year. नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिव किम्बर्ली चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं आपकी सप्ताह की और आपकी महीने की रीडिंग्स। तो शुरुआत करेंगे हम पॉजिटिव किम्बर्ली शो पर इस बार मार्च के लिए। So we'll see you there. Hello there, Aries. So it's Kim and TJ. We've got an awesome reading for you. नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिव किम्बर्ली शो पर और शुरू करते हैं इस सप्ताह को, मार्च के पहले सप्ताह को मेष के साथ। तो निकालेंगे 3 कार्ड्स, देखते हैं आपके लिए क्या हैं। 3 कार्ड्स। All right, Aries. So here are your cards. First things first, we have the summer solstice radiance, then mountain strength, then dawn and new beginnings. This looks like it's going to be an amazing month for you. So remember, all in all, that you have this beautiful sunshine that's coming over all of the mountains for you this month. And what I mean by this is the dawn is there to remind you that there is a new light, there's a new day, even if there's darkness all the time, right? Even if it's night, there's going to be a sun eventually. You've got it now. You have the sun inside of you, which is the most amazing part, huh? And the best part about it is that the sun, like in the dawn, new beginnings, is rising over these mountains in the distance. And you have the mountain too, reminding you that you are strong, you are courageous, and no matter what happens, you have this ability within you. Congratulations. It looks like this radiance, this sunshine, this light inside of you is going to be getting brighter and brighter every single day this month, and it's going to shine through every ounce of your being. मेष, इस महीने के 3 कार्ड्स आपके हैं रेडियंस, स्ट्रेंथ एंड न्यू बिगिनिंग। बहुत ही सुंदर सप्ताह है। शुरुआत बहुत अच्छी है, इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। देखिए 3 कार्ड आपके पास आए हैं न्यू बिगिनिंग्स। दैट मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज का भंडार आने वाला है। मैं बहुत अच्छा खुशी के द्वारा ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे और आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, तो अब जो आप काम करने वाले हैं उसकी अपॉर्चुनिटी को आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब करेंगे, आप उस पर निखर के आने वाले हैं। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके सारे रिसोर्सेस आपके साथ रहने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। और मैं तीसरे कार्ड की बात करूं तो तीसरा कार्ड है मेरा पास न्यू बिगनिंग और स्ट्रेंथ के अलावा। अगर मैं थर्ड कार्ड बात करूं तो रिलेट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा नीचे गिर गया वो कार्ड तो जो है वो रेडियंस है। तो रेडियंस आपको ये शो करता है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी स्ट्रेंथ के साथ जो आप निकल के आ रहे हैं, तो आपके पास लोग आएंगे, आपके पास हेल्प आने वाली है, आपकी वाइब्स क्रिएट होने वाली है, आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है। अगर मैं इसको बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूं तो सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई नई खबर मिलने वाली है, पैसे संबंधित आय के स्रोत बनने वाले हैं, कुछ फंसा हुआ पैसा आएगा। बहुत ट्रेडिशनली फैक्टिंग, अगर मैं फैक्टर्स बात करूं तो बहुत सुंदर सप्ताह, हर काम सफल होने की पूरी आशा है। तो ये थे आपके इस सप्ताह की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए काज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और नमस्कार, धन्यवाद। Namaskar. Hey there, Taurus. So it's Kim and TJ. We've got an awesome card for you for this upcoming month. Let's check it out. नमस्कार, स्वागत है पॉजिटिव किम्बर्ली शो पर और शुरुआत करते हैं मार्च के सप्ताह की वृषभ के साथ। निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स, जहां आपको मिलेगी आपके इस सप्ताह की रीडिंग्स। लेट्स ड्रॉ 3 कार्ड्स। Okay, Taurus. So your cards are these. First off, ceremony invocation. Next, ancestors, generations. Ooh. And then fairies, earth magic. Okay, so what I'm really feeling like is what's going on here is your guides are telling you to invoke them. It feels like you don't have a way here, but your guides are there to remind you that you actually have all the answers that you could possibly need within them, which is such a magical thing. So, if you are feeling lost, if you're feeling like you need guidance, just call on them. They are there to help you. They're there to assist you. That's what they do. They have already made your soul a promise to guide you through these times, and guide you they will if you allow them to.
This will only lead to magic. So by the end of the month, you're going to be feeling totally free, especially starting to see how beautiful the world around you actually is, because sometimes we forget, don't we? That's okay. Remember, there's magic everywhere we look, love. Everywhere we look. सो वृषभ, मार्च के पहले सप्ताह के आपके 3 कार्ड्स हैं, जनरेशन, इन्वोकेशन एंड अर्थ मैजिक। देखिए, शुरुआत में बात करते हैं इन 2 कार्ड्स को मिला के, जनरेशन एंड इन्वोकेशन। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में आपको मैं थोड़ा सा क्लू देना चाहूंगा। अगर आप किसी ऐसे काम में फंसे हुए हैं जिसका अभी पिछले कुछ सप्ताह में ही आपको ध्यान आया है, या आपसे को कुछ नया काम अभी कुछ हाल फिलहाल ही बना है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से कीजिएगा। क्योंकि अगर मैं आपसे थोड़ा सा खुलकर कहूं तो पिछले कुछ समय की समस्याएं इस सामने जुड़ने वाली हैं। जैसे अगर एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो मैं कुछ काम करने जा रहा हूं, कुछ चीज खरीदने जा रहा हूं और पीछे से मेरी कोई जिम्मेदारी आ गई, तो मैंने उस काम को, उस प्लान को ड्रॉप कर दिया। तो मुझे ये देखने को मिल रहा है इस सप्ताह थोड़ी सी जिम्मेदारी वाले काम आपके पास बढ़ने वाले। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका थर्ड कार्ड है, अर्थ मैजिक। देखिए, अर्थ मैजिक आपको ये इशू कर रहा है कि आपके पास संसाधन ऐड होने वाले हैं। संसाधन ऐड करने की बात करूं तो कुछ भी साइड बिजनेस या आपकी कुछ इनकम या प्रमोशन या कुछ भी एक ऐसा ऐड होने वाला है जो आपकी फॉर्मल जो आपकी लाइफ चल रही है, जो एक मोनोटोनस लाइफ चल रही है, उसमें कुछ एडिशन लगने वाला है। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो कुछ नया एग्जाम फॉर्म है, नया रिजल्ट हो सकता है, या कुछ मार्क्स हो सकते हैं, या फिर कुछ नया कोर्स हो सकता है, या नए कोर्स की कोई प्लानिंग हो सकती है। तो कुछ भी एक नया सप्ताह आपके घटने वाला है। तो मैं 2 शब्दों में क्लियर करना चाहूंगा, डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, थोड़े संसाधन आपके पास नए ऐड भी होने वाले हैं। तो ये थी आपकी इस सप्ताह की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। Namaskar. धन्यवाद. Thank you so much. Bye. Hey there, Gemini. It's Kim and TJ here. We have a card reading for you for the month of March 2022. नमस्कार, स्वागत है पॉजिटिव किम्बर्ली शो पर और शुरुआत करते हैं मार्च के पहले सप्ताह के मिथुन के साथ। तो देखेंगे क्या है आपके लिए सप्ताह में, निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स। Alrighty, Gemini. So here are your cards for this month. First thing we have is childhood innocence. Next, Green Man Synergy reversed. And then followed by river movement. Alright, I know exactly what's going on here. So, your guides are saying that you have to look back into your past. You have to remember what made you so happy, what made you so giddy, what made you feel childlike whenever you were a child. Some people, they didn't even have that experience as children growing up. And I'm feeling like that might actually resonate with you now. If you feel like this way, remember that you can do whatever you need to get that feeling back before you had to grow up. Next we had is Green Man Synergy Reverse. Now this feels like, for you, it feels like everything's going against you, but it's not. It's actually all working out in your favor. Just trust the process, please, because everything that's working is working for you, not against you in this life. And lastly, we have is River Movement. Progress is progress, my love. No matter if it's slow or fast, or there's a lot of twists and turns. If you're moving, you're moving. And your guides want you to remember that any movement at all in this process is movement. It's okay. मिथुन, सप्ताह के 3 कार्ड्स हैं मूवमेंट, सिनर्जी एंड इनोसेंस। किन्हीं 2 कानों को मिलाते हैं और बात करते हैं सिनर्जी एंड मूवमेंट की। देखिए, किसी भी नए काम को करने का सीधा सीधा संदेश है, आप अपनी प्रगति पे अग्रसर हैं। अगर मैं करियर ओरिएंटेड बात करूं और आपके लाइफ से रिलेटेड रिलेशन की भी बात करूं तो बहुत अच्छा जा रहा है। आप जिस चीज पर अभी पकड़ बनाए हुए हैं, जो चीज आप कर रहे हैं, वही आपके लिए बेटर है इस समय के हिसाब से, समय अनुसार। और जो संसाधन आपके पास है उनका बहुत अच्छे तरीके से आप यूज ले रहे हैं। तो ये समय बहुत मोटिवेशन वाला है, काफी मोटिवेटेड फील करेंगे आप इस सप्ताह। और काम की प्रगति और काम का परिणाम दोनों ही आप जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार ही मिलने वाला है। तीसरा अगर मैं कार्ड की बात करता हूं तो देखिए, इनोसेंस। तो अगर मैं इनोसेंस से रिलेट करना चाहूँ आपके जीवन को और आपके कुछ आने वाले दिनों को, इस पहले सप्ताह को, तो आपको इस सप्ताह सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है।
और आपके पास काम वही बनने वाले हैं, कामों की परिणाम वही मिलने वाले हैं जिनमें आप बहुत स्ट्रांग हैं। देखिए इनोसेंस को क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जस्ट लाइक बच्चे की तरह है, एक आपके उस चीज की तरह है जहाँ आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको कुछ मतलब नहीं, आप अपने में ही जी रहे हैं, दैट्स इनोसेंस। तो इस तरीके से आपको वो काम मिलने वाला है जहाँ आपकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और बहुत निखर के आने वाले हैं। तो ये थी आपकी इस सप्ताह की, इस वीक की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए काज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अपना समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। Namaskar. Thank you so much. Bye. Hello, dear Cancer. It's Kim and TJ here. We have some card readings for you for the month of March 2022. Let's hop on in. नमस्कार, स्वागत है पॉजिटिवली किम्बर्ली शो में। और शुरुआत करते हैं मार्च के पहले सप्ताह की कर के साथ। निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स और देखेंगे क्या है आपका इस सप्ताह में आपके लिए। तो लेट्स ड्रॉ 3 cards. Okay, Cancer. So here are your cards for March. First thing we have is lightning power, followed by fog veiled, then tsunami wake up call. Oh my gosh. Okay. So it feels like what's going on here is that you are coming into your own power. Sometimes it feels like you forget exactly how powerful you are. You are this amazing manifester. You have the power to create anything you want in this life, which is absolutely amazing. Your guides just want you to remember how absolutely powerful you are. Now, this is saying fog veiled, which is telling you that obviously you don't understand everything that's going on in your path right now, and that's okay. If you were meant to have the answer right now, you would have it. Get comfortable in not knowing everything and not being able to control everything at this point. Your guides are saying this is going to be key for you in order for you to truly develop and let go and surrender your flow to the divine. And lastly, we have his divine, we have a tsunami wake-up call. Your guides are saying that this is time for you to really get out of that comfort zone of yours, and I'm really feeling like that lack of control with that fogginess or that unclarity is going to be key here. Let go, because you don't need to control every aspect, but your guides are saying that this is going to be time for you to let go of some things that you're very used to doing and you're used to acting like. So just keep that in mind and trust you are always in the best hands with your guides at your side. कर्क, इस सप्ताह की 3 कार्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 कार्ड्स आपके चीज़ों को बहुत अगर मैं कहूँ कि तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से केंद्रित होकर आपको दर्शा रहे हैं, जिनमें ये क्लियर बात हो रही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन छोड़ने की जरूरत है। देखिए अगर मैं इस कार्ड की बात करता हूँ तो ये वेकअप कॉल है, दूसरे की बात करता हूँ तो पावर है, तीसरा व्हील। तो देखिए हम लोग बात करते हैं फॉग वाले कार्ड की, तो फॉग वाले कार्ड्स में क्लियर सीन हो रहा है कि आपको एक आशा की किरण की जरूरत है जो आपके बादल, जिससे बादल से छट कर आने वाला है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यही है कि इस सप्ताह आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है। अगर कोई आपको मुश्किल लग रही है तो उसको ध्यान से देखिए, उसको इवेल्युएट कीजिए और अपने प्रक्रिया में और अपने एक इकोसिस्टम में उसको मुश्किल मत में बनने दीजिए उस प्रक्रिया को और उस संभावना को जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो यहाँ ये जरूरत है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ पावर की, तो देखिए यहाँ आपको ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि करिए। अगर कुछ आपको लगता है मुझे काम ठीक करना है, इससे मुझे फायदा होने वाला है, तो उसको पूरे अपने निश्चय के साथ कीजिए। काम अच्छा मिलने वाला और परिणाम आपके पक्ष में हो सकता है। लेकिन तीसरे कॉल की अगर मैं बात करता हूँ, तीसरे कार्ड की बात करता हूँ तो वेकअप कॉल ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है कंफर्ट जोन से निकलने की, अदरवाइज आप इसी में फंस कर रह जाएंगे और फिर जो आपके सपने हैं, जो आपका परिणाम है, जो आपके उद्देश्य हैं, वो शायद कभी पूरे ना हो। तो ये थे आपकी 3 कार्ड्स की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। समय देने के लिए धन्यवाद, Namaskar. Thank you so much. Bye. Hello, dear Leo. It's Kim and TJ here. We have a reading for you for the awesome month of March 2022. नमस्कार, स्वागत है पॉजिटिव किम्बर्ली शो में। शुरुआत करते हैं मार्च के पहले सप्ताह की सिंह के साथ। निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स और देखेंगे क्या है आपके लिए इस सप्ताह में। तो लेट्स ड्रॉ 3 cards. Okay, Leo. So here are your cards for March. First thing we have is Cave Sanctuary, then Crystal's Focus reversed, and then Rain Purification reversed. Okay. Love. Okay, so here's what I'm feeling is going on. First off, Cave Sanctuary is a reminder that you have this place of inner peace, this place where you can truly be yourself and no one can judge you inside of you. This is a place of serenity. This is your own temple. There's a reason that they say that your body is your temple.
It literally is. This is the sanctuary you've been given, and remember to treat it as such place of royalty. Next we have is crystal's focus. And the way it was reversed, I'm really feeling like it's telling you to look inwards, because this again is signifying to go inwards. Your guides are saying that in order to get through all of this chaos I'm about to tell you about, is you're going to have to dive in deep. You're going to have to look inside of yourself and figure out what is causing this initial pain or trauma to arise. So next up we had was rain purification reversed, right? So this is telling you that yes, whenever it's time for us to release some things, it washes away. However, after the rain, we have a little bit of fog here, right? You can see that fog. So that's telling you that in order for it to go back into the clouds, in order for it to become one with the universe again, sometimes it has to come back up. It has to rise to the surface and allow yourself to really let go once and for all. Give one last hurrah, just saying, hey, are you sure you're done with me? I'm pretty cool, even though you're done. Let it go, it's okay. सिंह, इस सप्ताह आपके तीनों कार्ड्स की समस्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए तीनों कार्ड्स के अंदर सेंचुरीज, फोकस एंड प्यूरिफिकेशन। अगर मैं सेंचुरी की बात करता हूँ जिसके अंदर केव दिख रहा है, मैं प्यूरिफिकेशन की बात करूँ और मैं बात करूँ आपके तीसरे कार्ड की जिसमें फोकस की बात हो रही, तो देखिए कोई ऐसी समस्या है जिसमें आप बहुत फंसे पड़े हैं। मुझे यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट करना चाहूँ उस समस्या पे, तो वो समस्या मुझे कुछ रिलेशन से या किन्हीं लोगों से संबंधित लग रही है। हो सकता है आपके दोस्तों के बीच में, हो सकता है आपके ऑफिस के प्रमोशन से रिलेटेड हो, या हो सकता है फिलहाल कुछ काम में आप किसी रिलेशन को लेकर बहुत फंसे पड़े और बहुत परेशानी में हैं। तो देखिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है इस चीज़ पे सोच विचार करने का, कोई बड़े निर्णय पे आने का, क्योंकि यहाँ आपको जो केव का ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, वहाँ देखने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर प्यूरिफिकेशन की बात करता हूँ तो वो फ़ायदेमंद वाले पॉइंट को ही क्लियर कर रहा है। तो देखिए इस सप्ताह आपको ज़रूरत पड़ी है किसी रिलेशन पे काम करने की। तो ये था आपका सप्ताह की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए काज के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। Namaskar. Have a good week. Bye. Hello Virgo, it's Kim and TJ here. We are pulling some cards for you for the month of March. नमस्कार, आपका स्वागत है पॉजिटिव किम्बर्ली शो पर, और शुरुआत करेंगे मार्च के पहले सप्ताह की कन्या के साथ। तो निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स और देखते हैं क्या है आपका इस सप्ताह ऑफिशियल 3 कार्ड्स। Alrighty Virgo, so here are your cards for the month of March. First things first, we have this tree grounding, loving compassion, okay, and lotus flower unfoldment. So it seems like you're exactly where you need to be. But honestly, you just need to work on grounding, and I'm really feeling like daily meditation is something you need to focus on, even if it's 3 minutes, 5 minutes, whatever the case may be. Whatever you feel like you can actually carve into your schedule and commit to is what you're going to need to do this month. Your guides are saying that you're just not grounded. You're not completely in your body, and that's okay. This is ultimately going to give you that love, compassion that you need for yourself. I'm feeling like you're very, very hard on yourself, and I've told you before that you need to be easier on who you are, and it's okay that you do some things that are strict. However, show yourself that love and compassion that you would show to someone else that is less than perfect. And lastly, we have his lotus flower unfoldment. So your guides are saying every single step you're taking is helping you grow and develop beautifully. Don't take this for granted, and please don't forget that every lesson is a lesson learned, and everything that you're learning is a chance to grow and develop and truly unfold on your spiritual and emotional and physical development path. कन्या, मार्च के पहले सप्ताह के 3 कार्ड हैं आपके ग्राउंडिंग, कंपैशन एंड अनफोल्डमेंट। देखिए इस कार्ड की बात करूँ अनफोल्डमेंट की और कनेक्ट करते हैं इसको कंपैशन के साथ। तो देखिए सप्ताह में ज़रूरत है
किसी निर्णय से पहले सोचने समझने की, और अगर कोई काम करते आ रहे हैं तो रुकिए, थोड़ा समय दीजिए, शायद वहां पर आप कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं। अनफोल्डमेंट का मतलब यही है कि इस महीने, इस सप्ताह आपके लिए कुछ निकल के आने वाला है। चीजें, वो समस्या भी हो सकती है, वो कोई उसका संसाधन भी हो सकता है और उसका कोई समाधान भी हो सकता है, तो देखने विचारने की जरूरत है। कंपैशन का मतलब मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, कंपैशन एक चीज आपको रिलेट करने वाले हैं किसी चीज से, कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको बहुत डेडिकेटेड होकर कीजिए। देखिए, अगर मन कहीं पे भी अटक रहा है, वो मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो उसे समझाइए कि समझ देने की जरूरत है। वो अनफोल्डमेंट से इसलिए भी कनेक्ट हो रहा है कि आपकी चीजें नई रूप में, स्वरूप में सामने आने वाली है। वो हो सकता है पिछला कोई प्रोसेस है जिसे बहुत अच्छे तरीके से करने की जरूरत है, जो कि कंपैशन से रिलेट हो रहा है। और अगर मैं थर्ड कार्ड की बात करता हूँ, मेरा थर्ड कार्ड है आपके पास ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग भी यही चीज क्लियर कर रहा है, आपको सोचने की, रुकने की और खुद को एक बार इवेल्युएट करने की जरूरत है। तो सप्ताह थोड़ा सा आपके लिए मानसिक तनाव वाला रह सकता है, पर आशा करता हूँ आपके लिए ये सप्ताह थोड़ा सा खुशियां भी लेकर आएगा। तो ये थी आपकी 3 कार्ड्स की रीडिंग। इस वीक की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। Namaskar. Thank you so much. Bye. Hi there, Libra. It's Kim and TJ here. We have an amazing reading for you for the month of March. So let's hop right in. Very amazing reading we have. तो शुरुआत करते हैं तुला के साथ। मार्च के पहले सप्ताह की निकालेंगे आपकी 3 कार्ड्स, निकालेंगे 3 कार्ड्स और देखते हैं क्या है इन 3 कार्ड्स में इस सप्ताह आपके लिए। Let's talk 3 cards. Alrighty, Libra. So here are your cards for the month of March. First things first, we have this Dragonfly Emergence. Ooh, Spring Equinox Rebirth. And Ancestors Generations. This is going to be an amazing month for you. So, this is saying that you are starting to come out of your shell. You're starting to show the world who you actually are. You're rising above all the gossip. You're rising above everything that no longer serves you. And your guides see you. We all see you as being this person who is willing to grow and develop themselves. We see you. Next, we have a Spring Equinox Rebirth. Now, this is telling you that you are showing the world who you are. That birthing process is painful, but you've gotten all that part behind you. It's time for you to walk out proudly into this light, into this brand new life that you're creating for yourself. Congratulations, you have transformed. And lastly, we have this Ancestors Generations. Here your guides are just reminding you that they are there. Don't be afraid to let go of those old ways that no longer serve you whenever you come across them. And remember, you are always in good hands. Your ancestors are there loving you, supporting you, and guiding you along this path. तुला, इस सप्ताह के 3 कार्ड्स हैं रिबर्थ, इमर्जेंस एंड जनरेशन। देखिए, बहुत सुंदर कार्ड है। 3 चीजें बहुत क्लियर कट समझ में आ रही हैं और दिख रही हैं। पहला, अपॉर्चुनिटीज हैं इस सप्ताह, नई नई चीजें आने वाली हैं। आपका चाहे वो संबंध हो, पढ़ाई हो, कमाई हो, और या फिर कोई आपका पुराना मुद्दा फंसा हो, तो वो नए तौर से सॉल्व होने वाला है। रिबर्थ की अगर मैं बात करूं तो रिबर्थ में यही है कि नई अपॉर्चुनिटीज हैं और वो आपके इस प्रोफेशन से रिलेटेड होने वाली हैं। अगर मैं आपके संसाधनों की और पैसे की भी बात करूं तो बिल्कुल दुखी मत होइए। अगर कोई परेशानी बहुत पहले से चल रही है तो वो अब आने वाले सप्ताहों में यहाँ से कम होती दिख रही है। फिलहाल पहले सप्ताह में बहुत सुंदर यहाँ से दृष्टि दिख रही है। आपका थोड़ा सा मानसिक तनाव कम होगा और स्वास्थ्य में भी अच्छा रहेगा, और परिवार में कोई खुश खबरी आ सकती है। वो किसी भी एडमिशन कहीं जाने से रिलेटेड हो सकती है, और यहाँ पर मैं जाने का भी देख रहा हूँ, कहीं घूमने की संभावना है। और अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर जो पुराने खराब रिश्ते हैं वो यहाँ पर नए तौर पर भी सामने आने वाले हैं। और अगर मैं बात करता हूँ जनरेशंस की, तो जनरेशंस का सिंपल सा कनेक्शन में यही बार आपको, अभी वो जो लास्ट वाली मैंने बात की थी, पुराने रिश्ते उभर के आने वाले हैं, वो जनरेशन ही है कि पिछले कुछ समय से अगर किन चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हैं, पिछले कुछ समय से आप किसी से बात कर रहे हैं या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस सप्ताह होने वाला है। तो अगर होल स्पष्ट शब्दों में कहूँ, बहुत सुंदर सप्ताह है। तो ये था आपकी 3 कार्ड्स की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आशा करता हूँ आपको रिलेवेंट दिखा होगा। धन्यवाद, नमस्कार। Namaskar. Thank you so much. Bye.
Hey there, Scorpio. It's Kim and TJ here. We have an awesome card reading for you for the month of March. You ready? Yeah. नमस्कार है पॉजिटिवली किम्बरली शो पर और शुरुआत करते हैं मार्च के पहले सप्ताह की वृश्चिक के साथ। निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स और देखते हैं क्या है सप्ताह आपके भविष्य में। Let's draw 3 cards. Okay, Scorpio. So here are your cards for the month of March. First things first, we have this winter solstice reflection, shaman, ancient healing wisdom, and you already see the new moon promise peeking out from behind it. This looks like it's going to be an amazing month for you. So, first things first, we have this winter solstice reflection. Your guides are urging you to look back on your past life, and not past life, the past of your life, and see how far you've come. And if you are drawn to past life readings, then you can definitely look back on those as well. I do offer those if you need any assistance. So, your guides are wanting you to look back and see how far you've come, because I guarantee you it is much further than you realize. Next, we have the shaman, ancient healing wisdom. Now, your guides are reminding you that in order for you to heal the past, you have to figure out what you've learned from it. And you have all of this ability to heal yourself. You don't need anybody else to actually heal anything for you, but you can do it because you have that power inside of you. Your guides are just here reminding you not to be scared of diving in deep of who you are. You have this strength. And lastly, we have his new moon promise, an easy reminder that anything that has been promised to you will come to you. It's not going to anybody else. It isn't meant for anybody else. Sometimes we forget that. Keep your eyes on your own canvas. You're the only Picasso here. वृश्चिक सप्ताह के 3 कार्ड है रिफ्लेक्शन, हीलिंग एंड प्रॉमिस। देखिए, अगर मैं बात करूं इन 2 कार्ड्स की, रिफ्लेक्शन एंड प्रॉमिस, देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में इस सप्ताह की गणना ये कहती है और एनालिसिस ये कहता है कि किसी कार्य में जो आप कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, किसी रिलेशन में हैं, किसी प्रोफेशन को पकड़े हुए हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उसको बहुत डेडिकेटेड होकर कीजिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा परेशानी दिख रही है। वो परेशानी उन कार्यक्रमों और निर्णयों के कारण नहीं है जो आप कर रहे हैं, परेशानी आपकी उधेड़पुन है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है बार बार आप रिवेल्युएट कर रहे हैं खुद को। उसको रोकिए, जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए डेडिकेशन के साथ। थर्ड कार्ड वही कनेक्ट हो रहा है जो मैं आपको कह रहा हूँ हीलिंग के बारे में, कि हीलिंग का कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी उधेड़बुन में फंसे हुए हैं, बहुत रेगुलर आप उस इंटरवल्स में उस चीज को रिवेल्युएट कर रहे हैं, उसको रोकिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरत है, और खुद पे विश्वास रखिए, आप जो कर रहे हैं वो सही है। आने वाले सप्ताह में कुछ बड़ा हो सकता है इन कार्ड्स के बेसिस पे। तो ये थे आपके 3 कार्ड्स की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आप रिलेवेंट पाए होंगी चीजें। धन्यवाद, नमस्कार। Namaskar. Thank you so much. Bye. Hey Sagittarius, it's Kim and TJ here, and we have an awesome reading for you for the month of March. नमस्कार, स्वागत है पॉजिटिव किम्बरली शो पर और शुरुआत करेंगे मार्च के पहले सप्ताह की धनु के साथ। निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स और देखेंगे क्या है आपके लिए भविष्य में। Let's draw 3 cards. Alrighty Sagittarius, so here are your cards for the month of March. First things first, we have is mountain strength, lake stillness, and ceremony invocation. Okay. So what I'm feeling is really going on here is your guides are saying that you are strong, and they're telling you honestly you need to stand tall, stand stronger than you feel like you need to sometimes, because you're going through a lot at this time. However, it feels like you are making this a little bit harder than it needs to be made. So what you need to do is absolutely nothing. Yep. Don't do anything. It feels like the action you're taking, although it feels aligned with you, it doesn't necessarily have anything to do with their plan, in a sense. You see, they're trying to help you out. There are so many moving pieces working for you. And in order for you to be fully surprised and fully taken up by this, you have to surrender the control to the universe. Now, I know it's hard. But go ahead and start telling yourself that you have whatever it is and let go of what it looks like.
what you feel it looks like, because it could be something completely different. I'm feeling like you are perfectly aligned with this and it's going to make you so incredibly happy, but at the same time, if you keep on trying to control things, it's gonna go right past you. So surrender. This is the only way to get what you want. धनु, आपके सप्ताह के 3 कार्ड्स हैं, स्टिलनेस, स्ट्रेंथ एंड इन्वोकेशन। हाँ। सिंपल सा अगर मैं बात करूं 2 कार्ड्स की, स्टिलनेस और स्ट्रेंथ, मुझे ज़्यादा शब्दों में कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टिलनेस से आप समझ जाएंगे कि चीज़ें फंसी हुई हैं, आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। मैं बहुत इंटेंशनली कह रहा हूँ आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बार बार बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों में जाकर, जो कंफर्ट जोन में है, जो पुरानी समस्याएं हैं उसी में फंसे रहकर आप केवल उनके बारे में बातें कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इस सप्ताह जरूरत है खुद को सोचने की, समझने की, उस पर काम करने की, एक्शन की जरूरत है। स्ट्रेंथ तो सेकंड कार्ड है, वो आपको क्लियर कट बता रहा है कि आप काम करिए, आप जिसके बारे में अगर थोड़ा सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं करिए। देखिए 90% हो सकता है कि चीज़ आपके फेवर में हो भी चाहे, 10% ना भी हो। तो सप्ताह आपको बहुत मौके दे रहा है, इस सप्ताह थोड़ा सा समझिए क्योंकि महीना बहुत बड़ा है, और अपने चीज़ों को रिवेल्यूएट कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर। तीसरे कार्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड कार्ड है आपका इन्वोकेशन से लेकर। तो यहाँ पर वही रिसीविंग फैक्टर की बात हो रही है कि देखिए जो भी करेंगे उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि फिलहाल समस्या यही है कि पुरानी किए गए चीज़ों कामों के कारण आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है सबका। तो मेरा यही आशा करता हूँ आपसे, थोड़ा अपने को ध्यान देंगे, अपने चीज़ों को रिवेल्यूएट करेंगे और चीज़ों को बदल के करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे आपकी 3 कार्ड्स की सप्ताह की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Namaskar. Thank you so much. Capricorn, it's Kim and TJ here. We've got an awesome card reading for you for the month of March, don't we? नमस्कार, स्वागत है पॉजिटिव किम्बर्ली शो पर, और शुरुआत करेंगे मार्च के पहले सप्ताह की मकर के लिए। तो निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स और देखेंगे क्या है आपके पास इस सप्ताह में आपके लिए। Let's draw 3 cards. Okay, Capricorn. So your only 3 your cards for this month are, okay, Island Solitude reversed, Wind Activation, and Forest Breath. Okay, so I'm feeling like you are lonely this month, but your guides are wanting you to realize that loneliness is not what you were asking for whenever you wanted some alone time. You don't need that outside attention. You don't need that attention that you crave from outside sources. What you need is time to find yourself and love yourself and take care of who you are. Remember that. That's the exact reason why you asked for alone time to begin with. That's the exact reason. Now, don't take that time for granted. It's not coming back. Next we have is Wind Activation, and I'm really feeling self-care here. So your guides are urging you to take care of who you are and start putting into motion those things that you want into your life. Like whether you want to start a yoga routine or you want to start really eating healthily. Your guides are wanting you to start doing it now. There's no time like the present, and if you don't, they're saying you will regret it. And lastly, we have this Forest Breath. Your guides here are telling you that it's time for you to come to peace with that breath inside of you. This is the life force of your entire being. Remember who you are at the core. You are nothing but stardust. You are earth, air, fire, water, spirit. And that includes air, as I said. That's part of the breath of who you are. The wind is just showing you, hey, this is how it's done. That's who you are at the core. Remember that. मकर आपके 3 कार्ड है, सॉलिट्यूड, एक्टिवेशन एंड ब्रेथ। 2 कार्ड्स कनेक्ट करते हैं, एक्टिवेशन एंड ब्रेथ। एक्टिवेशन एंड ब्रेथ आपको बता रहा है इस सप्ताह समय देने के लिए जो चीजें कर रहे हैं और उन चीजों को पकड़ने के लिए जो बहुत समय से अटकी हुई हैं। देखिए ब्रेथ आपको एक संदेश दे रहा है कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ठहराव लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। आप चीज़ों को सोच समझ नहीं रहे हैं, आप करते जा रहे हैं। वो देखिए वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका पढ़ाई हो सकती है, वो आपके सगे संबंधियों से वाली बात हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है, कोई नया व्हीकल हो सकता है। रुक जाइए, थोड़ा सा समय लीजिए क्योंकि आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, आगे कुछ मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जहां से मुझे इन शब्दों से पता चल रहा है।
थर्ड कार्ड की बात करूं मैं, सॉलिट्यूड। 3 कार्ड से सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है, समय देने की जरूरत है, निर्णयों को रोक दीजिए, कोई भी निर्णय मत लीजिए अभी, ये सप्ताह हानि देने वाला है, किसी भी फेवर में हानि देने वाला है। आशा करता हूं आपको रेलेवेंस क्लियर हुआ होगा, और दूसरी तरफ से ये भी सोचता हूं कि आपका ये सप्ताह अच्छा जाएगा, थोड़ा से परिणामों की जो दशा है वो उतनी बुरी नहीं होने वाली, लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव वाला और बिजी वाला सप्ताह है। तो ये थे आपकी 3 कार्ड्स की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। Namaskar. Thank you so much. Bye. Hey Aquarius, this is Kim and TJ here. We've got your monthly reading for the month of March 2022. बिल्कुल, स्वागत है पॉजिटिव किम्बर्ली में। शुरुआत करते हैं मार्च के पहले सप्ताह की कुंभ के साथ। निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स और देखेंगे क्या है आपका भविष्य अगले सप्ताह इन 3 कार्ड्स में। लेट्स ड्रॉ 3 कार्ड्स। Alright Aquarius, here are your cards for the month of March 2022. Well, we have Fire Passion, Wolf Instinct, alrighty, and Fairies Earth Magic. Okay, so I'm feeling like what's going on here is you are igniting this fire within you. You're finding this passion that you used to have within yourself, and it all feels very bright, shiny, fiery, and new to you. However, you're doubting yourself every once in a while, but your guides are telling you trust your instincts. You wouldn't be getting these nudges or urges if they weren't meant for you to act on, okay? And also trust your voice. It feels like sometimes you're regretting what you're saying, but you're learning the entire time. So remember, everything's part of this process here. And then lastly, we have this Fairies Earth Magic. Life is nothing but this masterpiece that you're creating. You are the creator. You have these magic wands that help you develop and grow and create this masterpiece on this canvas or mosaic or however you feel like it's done. This masterpiece is something that you make with your own hands, with your own energy, with everything you are. Remember, there's magic everywhere. Every single place you look, as long as you open your eyes to it. मार्च के पहले सप्ताह के 3 कार्ड है, इंस्टिंक्ट, पैशन एंड अर्थ मैजिक। देखिए, 2 कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं, इंस्टिंक्ट एंड पैशन को। अच्छा, सुंदर है, सुंदर सप्ताह है, जो कर रहे हैं करते रहिए। रिजल्ट अच्छे मिलने वाले आने वाले सप्ताह में। बट जो कार्ड आपका पैशन क्रिएट कर रहा है वो ये है कि अगर आपको बीच में कहीं लगता है मुझे नई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, वो दिख रहा है मुझे यहाँ से। अगर पहले सप्ताह में कुछ भी नया करने का आपका अगर मन कर रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि पैशन आपको क्लियर यही बता रहा है कि जिस भी चीज़ से आप रिलेट करने वाले हैं, जिस भी चीज़ को आप करने वाले हैं अभी, उससे आने वाले रिजल्ट काफ़ी बहुत अच्छे मात्रा में, बहुत अच्छे लेवल पे आपको फायदा देने वाले हैं। और लास्ट कार्ड में अर्थ मैजिक की बात करूं तो सीधे सीधे कनेक्शन है प्रॉफिट को लेके, कि जो भी आप इस सप्ताह प्रोसेस में हैं या जिस भी चीज़ को नया ऐड करने वाले हैं, जो भी चीज़ आप नहीं करने वाले हैं, सप्ताह बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। तो बेशक टेंशन मत लीजिए, काम कीजिए, अपना कर्म करते रहिए और परिणाम आपके फेवर में आने वाला है। तो ये थी आपके सप्ताह की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कर्ज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिएगा, और अपना समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। Namaskar. Thank you so much. Bye. Yeah. नमस्कार, स्वागत है पॉजिटिव किम्बर्ली शो पर, और शुरुआत करते हैं मार्च के सप्ताह की मीन के साथ, Pisces. Alrighty Pisces, so it's Kim and DJ here. We've got a reading for you for the month of March. Let's get started. First things first, we have as well breach reversed, alrighty, followed by love, compassion, okay, and then lake stillness. Alrighty, so with the breach reversed, I'm feeling like this is time for you to duck your head down, stay underneath the water. This is a time for you to rise to any occasion. I feel like you might be a little bit cocky at this point because you feel like this person really does like you, but that doesn't mean that they are ready for extravagant romance the way you like envision this going. It's okay. Next we have is love and compassion. Your guides are really telling you that this all has to do with love. It's time for you to be more compassionate with who you are and who this person is, right? Sometimes
just because we like things one way doesn't necessarily mean our partner is going to like things the exact same way. There are things called love languages, and if you aren't familiar with them, I'd highly recommend you guys looking them up. There's a test you can take so you can fully understand who each other are and how you like to give and receive love naturally. And lastly, we have this lake stillness. So your guides are telling you, please don't do anything rash at this time. I'm feeling like this is going to be a very energetic month for you. So just keep that in mind. And trust that everything will come whenever it's needed. It's just not right now, love. Don't rush the process. सप्ताह के 3 कार्ड से ब्रीच, कंपैशन, स्टिलनेस। देखिए पहले स्टिलनेस की बात करते हैं क्योंकि बहुत अकेला कार्ड है, बहुत सीधी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। कोई काम अटका हुआ है, कहीं मन लगा हुआ है, ठहरा हुआ सा महसूस कर रहे हो, पैसा फंसा हुआ है, रिलेशन पे इशू है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये दिखा रहा है सप्ताह। कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम है जो आपके पास अभी भी बनी हुई है, और मैं ये नहीं कह रहा इस सप्ताह सॉल्यूशन निकलने वाला है, पर हाँ प्रॉब्लम जरूरी है। वो प्रॉब्लम बनी हुई है पिछले कुछ महीनों से। अगले 2 कार्ड्स है ब्रीच एंड कंपैशन, जो काफी सुंदर सप्ताह को दर्शाते हैं उन प्रॉब्लम के अलावा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ ब्रीच और कंपैशन की, तो इस सप्ताह आपको उन्हीं पुरानी समस्याओं से निकलने की जरूरत है। देखिए वो आपकी जिंदगी का पार्ट होंगे कुछ महीनों से, कुछ सालों से, उसका समाधान भी निकलेगा, लेकिन आप उन चीजों के चक्कर में अपने काम को खराब नहीं कर सकते, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं जा सकते। जो ब्रीच है वो ये दिखा रहा है कि अगर किसी चीज में फंसे हुए, किसी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं और लगता है मुझे काम करने की जरूरत है, मुझे पीछे ऐसा किसी चीज का समाधान ढूंढने की जरूरत है, जो बहुत समय से काम चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी खुद पे ध्यान दीजिए, अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए। ब्रीच यही स्पष्ट कर रहा है, अपनी लिमिट से आगे निकलिए। और लास्ट में कंपैशन है, तो कंपैशन का तात्पर्य यही है कि बहुत अच्छे सुंदर तरीके से काम कीजिए, डेडिकेटेड होके कीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में बनेगा। परंतु वो समस्या जो अभी पहले कार्ड से बताई मैंने वो रहेगी। तो ये था आपके इस सप्ताह की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और अपना समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। Namaskar, thank you so much. Bye.